All right, viewers, those are the headlines and our top focus. What's taking place in Punjab in the aftermath of twin blasts that have rocked Jalandhar and Amritsar. We're now learning that Punjab Cabinet Minister Aman Arora has spoken on the incident of the twin blasts. He has claimed that opposition parties are blaming the Punjab government, and the reality is that the country has seen that whenever elections are scheduled in any state, the BJP resorts to such mischief to divide the people. Listen in. साथियों कल शामी जलंधर और अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ बीजेपी ਇਹ ਜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਇਹ ਜੀਆਂ ਕਾਰਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ All right, this is of course the latest in the war of words between the Aam Aadmi Party and the BJP over the twin blasts that had taken place last night outside the Jalandhar BSF headquarters and outside Amritsar's Khasa Can's bordering wall. These had taken place at 8 p.m. and 10:50 p.m. respectively. Joining us, over these blasts continue to escalate back and forth between the Aam Aadmi Party and the BJP. We're now learning that Aman Arora of the Aam Aadmi Party has come out, backed the claims that are being levelled, the allegations that are being levelled by Punjab Chief Minister Bhagwant Mann. He's also pointed his fingers at the Bharatiya Janata Party. बिल्कुल देखो, अगर बात करें तो इस मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां भी चुनाव होते हैं, जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं, भाजपा जो है सबसे पहले वहां पे ऐसी होशी हरकतें करती हैं, ऐसे षड्यंत्र रचती हैं। उनका कहना है कि जैसे पहले पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने ऐसे काम किया था, अब पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत गए हैं, तो उन्होंने कहा जब पंजाब की बात किया है तो पंजाब में भी ऐसे झंडे अपनाने जो है शुरू कर दिए हैं। तो उन्होंने बोला कि पंजाब एक शांति प्रिय अपना राज्य है, जहाँ पे ऐसे काम मत करो, हम शांति का संदेश देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो है बीजेपी के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई अपना दे रहे हैं। तो ऐसे ही पंजाब के आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा भी का भी यही बयान आ रहा है कि पंजाब में जो है बीजेपी जो है चुनावों को जैसे समय नहीं ठीक आ रहा है, तो वैसे वैसे वो ऐसे। All right, Narinder ji, hold on to your thought. बने रहिए हमारे संग. We're also being joined by Anila Singh, BJP spokesperson. Thank you so much for taking our time, ma'am, and speaking to us on NewsX. We've seen these twin blasts rock Jalandhar and Amritsar last night. In Jalandhar, it had taken place outside the BSF Punjab Frontiers headquarters, and in Amritsar, it had taken place outside the Khasa Can. Of course, very sensitive locations pertaining to our border security, our national security as well. There is a probe underway. The NIA teams are on the ground. The state security agencies are also on the ground. The Indian Army is also probing what exactly is the cause behind this. But at the same time, we are seeing politics and sort of one-upmanship by the Aam Aadmi Party over here, with Chief Minister Bhagwant Mann levelling allegations against BJP, Punjab Cabinet Minister Aman Arora also coming out and backing him. Why, in your assessment, is the Aam Aadmi Party doing all this? We do know that Punjab is a state that is headed for elections. But considering the sensitivity of this matter, why is the Aam Aadmi Party quick to pin blame on the BJP? My Ram to all, and this shows the failure of the system, whether we talk about the security or we talk about the law and order by Punjab government.
unfortunately, Punjab government is being headed by a person who really is in normal state, and he has proven it many times. It seems that Mr. Maan is unable to look after Punjab. And the situation and the condition of Punjab in today's date is horrendous. People are suffering there. And if Aam Aadmi Party is blaming Bharatiya Janata Party for the bomb explosions, this is most unfortunate thing. Because whether what Bharatiya Janata Party believes is, okay, fine, politics is there, but security for our nation comes first. This is our thought process. And Aam Aadmi Party is saying that because of the elections, Bharatiya Janata Party is creating some sort of chaos. This is not done at all. I think Mr. Maan, he should accept that he has failed Punjab. That is going to do some good to the people living in Punjab. Otherwise, he has to face the conclusions. All right, ma'am. With that, I would like to thank you for taking our time, speaking to us, of course, sharing your perspective. Remember, the probe is still in its preliminary stages. But coming back to the war of words, we now have a response from Union Minister Hardeep Singh Puri. He has stated that Punjab is not only a sensitive border state, but it also has a history of suffering from cross-border violence. He has added that India's western neighbor is using terrorism as a tool of state policy and exporting it. He's also responded to Punjab Chief Minister Bhagwant Mann. He has stated that Bhagwant Mann is employing a strange construct by stating that, claiming in fact that BJP is instigating unrest. Let's listen in to what Hardeep Singh Puri has had to say. Punjab is not only a sensitive border state, but it has a history of having to suffer from cross-border violence. जो हमारा वेस्टर्न नेबर है, they have been using terror as an instrument of state policy. They have been exporting terror. और कल के ब्लास्ट से पहले ही आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे पोस्ट थी, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी in fact has claimed responsibility for the Jalandhar attack. इसलिए it's all the more regrettable that के पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं मान साहब, उस पे ये अजीब किस्म का कंस्ट्रक्ट डाल रहे हैं. उन्होंने कहा, और बाय द वे चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इज ऑल्सो करंटली द होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ये ब्लास्ट जो है माइनर है. ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, माइनर है. एंड ये भी सजेस्ट किया कि शायद ये बीजेपी ने ये ब्लास्ट करवाया. तो हैरानगी इज टू माइल्ड अ टर्म, अनबिलीवेबल. उनके अपने जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने, गौरव यादव जी, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि ये आईएसआई बैक्ड. All right, there of course we've heard